ओके राजा, एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर दे अगे ਅਸੀਂ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 स्टेप्स याद है की सिक्के से ਅਸੀਂ पहला एग्रीकल्चरल इनकम देखनी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम देखनी, फिर इंटीग्रेशन कैन बी डन और कैन नॉट बी डन सोचने ਲਈ की रूल्स सी कि एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी रूल्स नाल बोलो देखे अगर ग्रेटर देन 5,000 तो यस एंड नॉन एग्रीकल्चरल ग्रेटर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मींस 2,50,000 भी हो सकती 3 लाख भी हो सकती एंड सो ऑन। ठीक है, अगर दोनों यस है तो इंटीग्रेशन कैन बी डन। इंटीग्रेशन मींस टोटल कर दो दोनों का सम टोटल और ओके ਉਹਦੇ स्टेप्स। ठीक है, बाकी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ क्वेश्चन ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन 7 ਦਾ फोर्थ पार्ट देखो ਪਹਿਲਾਂ, but before reading the part also read the first line. State with reasons whether the agricultural income is considered for income tax purposes in each of the following cases of an individual for the assessment year 2000 बोलो 25 26 and previous year 2024 25। ठीक है, and compute the tax liability under the old tax regime wherever necessary। पॉइंट नंबर 4 देखो, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितने गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ? नॉन एग्रीकल्चर में जान के सेकंड बोल रहे पास गए ना नेट पढ़ के। नॉन एग्रीकल्चर 4,90,000 एंड एग्रीकल्चर 45,000 दोनों पता लगे कि रूल्स के अंदर है यस आ रहे कि नहीं। एग्रीकल्चरल ग्रेटर देन 5,000 यस, नॉन एग्रीकल्चर ग्रेटर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की ओदी कोई एज लिमिट गिवन है पर्सन दी नॉर्मल या सीनियर सिटीजन या कुछ नहीं, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन कितनी 2,50,000। सो नॉन एग्रीकल्चरल भी 2,50,000 तो ज्यादा है अगेन यस। सो इंटीग्रेशन कैन बी डन। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नोट कितने। नाउ टेल मी स्टेप 1 एड एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना टोटल आ गया 5,35,000। स्टेप 2 कैलकुलेट टैक्स ऑन स्टेप 1 यस और नो। सो 5,35,000 थे अगर टैक्स कैलकुलेट करना आता फर्स्ट 2,50,000 थे नील टैक्स नील रेट एंड नील टैक्स यस और नो। नेक्स्ट 2,50,000 तो 5 लाख दी इनकम मींस कितना रेंज है 250 250 ਤੇ कितना 5% टैक्स तो 12,500 आ यस और उस तो बाद ਕੀ ਆਂਦਾ above 5 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ रेंज वाज 5 लाख टू 10 लाख यस और सो ਇੱਥੇ 5 लाख टू 535 तक स्टॉप हो गया। रेंज इज माधवी 35,000 ਉੱਤੇ टैक्स की लगना 20%। सो लगा के कितना आया 7,000 टोटल टैक्स बिकम्स 19,500 यस और स्टेप 3 बोलो एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक कितनी है 2,50,000 और एग्रीकल्चरल कितनी है 45,000 दोनों ऐड कर दो। सो 2,95,000 रुपीज यस और नो। सृष्टि नेक्स्ट पॉइंट बच्चा कैलकुलेट टैक्स ऑन स्टेप 3। सो 2 lakh 0 to 2,50,000 nil nil amount of tax and 2,50,000 to 2,95,000 रेंज कितनी आ गई 45,000 होते 5% टैक्स दैट कम्स आउट टू बी 2,250 टोटल टैक्स कितना आ गया 2,250 बस। सिस्टर स्टेप 5 difference of the taxes means difference of step 2 and 4। so step 2 minus step 4 कितना आया 19,500 minus 2,250 ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 17,250 रुपीज। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਬੇਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। इंडिविजुअल होना चाहिए और ਅਸੀਂ उस पिछली क्लास सेकंड क्वेश्चन पढ़े सी एचयूएफ है उत्थे नहीं मिलती तो सिर्फ की लिखा है इंडिविजुअल। सेकंड थिंग दैट इंडिविजुअल शुड बी रेजिडेंट तो आर लिख लिया कंडीशंस लिखिया तो हम सिखाएंगे। थर्ड थिंग वाज हिज टोटल इनकम शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 लाख। टोटल इनकम ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਸਿਰਫ ਨॉन एग्रीकल्चर ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 490 दैट इज लेस देन 5 लाख मींस एग्जेम्पशन मिलनी या नहीं मिलनी है रिबेट मिलनी या नहीं मिलनी है तो कितना मिलती है एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस है ना। तो मिल गए 12,500 टैक्स कितना आया 4,750 आफ्टर दैट एड 4% HEC। ठीक है 190 रुपीज का HEC बन गया और टैक्स पेबल आ गया ₹4940। एनी डाउट एनी वन
Next, देखो राजा, question 3, the B and C part were your homework. Yes. Now come to question 3A part. Compute the tax liability for assessment year 2025-26, previous year 23, sorry 24, 25. Yes or no? Next. Question says Mr. A's total income from all other sources is rupees 2,44,000, means non-agricultural, and from the agricultural income it is 1 lakh. What's the condition? Agricultural income greater than 5,000. Yes or no? Yes. And non-agricultural income greater than basic exemption limit. So normal exemption basically 2,50,000. Here it is given 2,44,000. So yes or no? No. No. This needs to be understood very clearly. ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੇसेस ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇसेस ਚ ਕੀ ਸੀ, both yes. So we did integration and we learned the steps to solve. Yes or no? Here one no is there. मतलब समझ आया, अगर एक नो आया या दोनों नो आए, इंटीग्रेशन कैन नॉट बी डन. रीजन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਚ नो लिखी. Yes or no? Reason is because non-agricultural income does not exceed the basic exemption limit, that is rupees 2,50,000. Yes or no? Next one. करना की सुनो, pen down. Therefore both the incomes will be taxed separately. So agricultural income अलग टैक्स करोगे और नॉन एग्रीकल्चरल ते अलग सोचोगे. ओके, सो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? 1 लाख. बट ਉਹਦਾ टैक्सेबिलिटी की है, इट्स एग्जेम्प्ट. So agricultural income ने डाल के लिखता है exempt under section 10(1). Therefore tax on agricultural income is nil. Very easy. Now non-agricultural income was 2,44,000. Solve as per slabs. So 0 to 2,44,000 only basic slab, nil, nil tax. Tax payable total क्या आ गया? Nil. Clear with this? Yes or no? Come to question 7, second part. Question 7, fourth part we did. Come to second one. There the agriculture income was, listen, pen down 2 minutes. Agriculture income was 4,500 and non-agriculture income was 3,10,000. Okay. So agricultural income less than 5,000. Oh, sorry, greater than 5,000 है या नहीं? No. मतलब it's less than 5,000. So first yes आया कि no? No. Second, non-agricultural income is greater than the basic exemption limit. Yes. But एक no मिल गया था. Integration cannot be done because the reason किया, agricultural income does not exceed rupees 5,000. So these both incomes need to be taxed separately. Agricultural income 4,500, it's exempt under section 10(1). And non-agricultural income 3,10,000. ਇਹਦੀ calculation कर लो. So 0 to 2,50,000 nil, nil tax, and 2,50,000 to 3,10,000. Can you range 60,000? उत्ते कितना tax? 5%. It comes out to rupees 3,000 and किया आ गया rupees 3,000. उन दोनों incomes के ऊपर tax कितना लगा? nil plus 3,000. 3,000 आ गया. उत्ते check करो rebate under section 87A. Yes or no? Rebate under section 87A the conditions. The person should be individual. He is. He should be resident. He is. And his total income is actually which one? Non-agricultural. Should be less than equal to 5 lakh. So it is. So मिल जाओगी rebate. That is actual tax or 12,500 whichever is less. So कितना आया से tax? 3,000. 3,000 और 12,500 whichever is less. मिल गई rebate. Tax payable क्या आ गया? नहीं. Any doubt? Any doubt? No. करो ये दोनों solve. Next देखो राजा, question number 4, case C. Compute the tax liability for the assessment year 2025-26 in following cases under old tax regime. Case A, case B, case C. We are doing case C. Mr. John, agricultural income is given 60,360. Non-agricultural income is given 4,80,000. And Mr. John is 70 years old. Mr. John is 70 years old, means he's a senior citizen.
So first of all, check the two conditions. Agriculture income is greater than 5,000. Yes. Non-agriculture income greater than the basic exemption limit and BEL is 3 lakh. Yes. So integration can be done. So case one, step one, agriculture income plus non-agriculture income. Add them both. Step two, calculate tax on step one. But the BEL will be, basic exemption limit will be 3 lakh. Yes or no? Second range will be 3 lakh to 5 lakh. Third will be 5 lakh to 540, 360. Yes or no? 5 lakh 40,000, 360. 5% and 20%. First will be nil. And tax came 18,072 rupees. Okay, yes or no? Third step is add agriculture income with basic exemption limit. So agriculture income is 60,360. Add it to the basic exemption limit, that is 3 lakh. So it becomes 3,60,360 rupees. Yes or no? Now okay, we have to calculate tax on that. So 0 to 3 lakh is nil. And 3 lakh to 360, 360 is 60,360. 5% tax 3018. Next step, difference between step 2 and step 4. So step 5 is step 2 minus step 4. So difference comes out to be 15,054 rupees. Then we have to check out the rebate possibility. Is he an individual? Mr. John? Individual? Yes. Nothing given. Normal means he's a resident also? Yes. Check the total income. Which one will you check? Non-agricultural? 4 lakh 80,000? Less than, it's less than or equal to 5 lakh. So yes, he will get a rebate under section 87A. 87A, that is actual tax or 12,500, whichever is less. So 12,500 rebate mil gayi. What will be left? 2554. Add 4% HEC. Your tax payable is 2656, which will be rounded off to 2660. ठीक है, as per section 288B. Okay, yes or no? Finish it up. देखो राजा, पेज पॉइंट 1.37 थे. देखो तो एक चार्ट गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस इनकम है ना, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਕਮ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਨਾ ਟਾਈਪਸ. ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਰੀਡ ਕਰੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, growing and manufacture of tea. This is rule 8. Rule 8 ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ growing and manufacturing of tea, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ grow and manufacture ਕਰ ਰਹੇ ਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਸੇਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. Yes or no? ਗਰੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰਪਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਾਓਗੇ ਉੱਥੇ. ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਜਿਨ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਮਾਰਜਿਨ ਤੇ ਨੋ. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗਵਰਨਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ 8. ਰੂਲ 8 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ 60% ਕੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% की मान लोगे बिजनेस है, इट विल गो टू पीजीपीपी, मींस नॉन एग्रीकल्चरल से कवर होगी. ठीक है. देन सेकंड इज रूल 7A फॉर रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. कादा रबर, पहला कादा सी टी, दूजा रबर. रबर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर की क्या 65 एंड 35 रूल 7A. याद करो, पहला टी फिर रबर, टी रबर, पहला की सी टी, दूजा रबर. टी ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਟੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਰਬਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ 60 40 ਔਰ ਰਬਰ ਤੇ 65 ਐਂਡ 35. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਸੀ 8 ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸੀ 7A. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦਾ ਹੈ 7B. ਕਾਫੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ 7B, ਬਟ ਕਾਫੀ ਦਾ ਰੂਲ ਰੀਡ ਕਰੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਫੀ grown and cured by seller, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਵਰਡਸ, grown and cured by seller. ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ 7B1 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B1 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B2 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B3 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B4 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B5 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B6 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B7 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B8 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B9 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B10 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B11 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B12 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B13 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B14 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B15 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B16 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B17 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B18 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B19 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B20 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B21 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B22 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B23 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B24 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B25 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B26 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B27 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B28 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B29 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B30 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B31 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B32 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B33 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B34 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B35 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B36 ਚ ਆਉਂਦਾ. 7B37
grown and cured by seller, that is under rule 7b1. ਉੱਥੇ partition ਕੀ ਹੈ 75 and 35, 75 and 35। और दूजा की लिखा पूरा coffee grown, cured, roasted, grounded by the seller in India with or without mixing chicory or other flavoring ingredients। मतलब है सिर्फ ग्रोइंग एंड क्योरिंग नहीं कर रहा, बाकी चीज़ें रोस्टेड ग्राउंडिंग सब कुछ कर रहा है। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ 7b1a, 7b1a ਇੱਥੇ 60/40। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ। एग्जाम ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ 60 ਕਿੱਥੇ 40 ਕਿੱਥੇ, ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਿਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। पहली चीज सीक्वेंस, पहला किदा सी टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, दूजा सी रबर मैन्युफैक्चरिंग, तीजा सी कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, चौथा सी कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड। बाकी डिटेल्स याद तुसी लाइन कर लो, ठीक है। रूल्स दे नंबर, रूल 8 देन 7a 7b1 7b1 इना भी क्लियर। परसेंटेज पहले 60 60 है तो नाल 40, दूजी 65 35, then 75 25 and 60 40 अगेन। सीक्वेंस याद हो जाओगी। उस तो बाद पॉइंट आता एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर च डाउट आया था, एग्रीकल्चरल ज्यादा है, समझ रहे चीज। तो पोर्शन ऑफ इनकम एग्रीकल्चरल पोर्शन की बनया जाता ज्यादा, कि डाउट आ जाता किनू एग्रीकल्चर मनी है किन्नी फिर टैक्सेबल एंड ऑल से सारा सोचोगे ना, और इस रूल एग्रीकल्चरल पोर्शन ज्यादा काउंट हो। ये सुनो क्लियर बच्चा। 60/40 किहदी है, पहला टी दी, उस तो बाद रूल 8 है ना, देन रूल 7, पूरा बोलो केड़ा रूल 7a दैट इज फॉर रबर मैन्युफैक्चरिंग, ओदे अंदर कितने परसेंट 65 एंड 35। देन थर्ड वन रूल 7b1 किदा है कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर, परसेंटेज 75 एंड 25। देन रूल 7b1a उधर कॉफी grown, cured, roasted, grounded by the seller in India with or without mixing chicory or other flavoring ingredients, ठीक है। परसेंटेज 60 एंड 40 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 ते आ जाओ, 8 इसी ना, कम टू क्वेश्चन 8 नाउ। देखो की लिखा है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 an individual submits the following information। पहली चीज इतने की आऊगा, या था असेसमेंट ईयर 25-26 या ऊपर आऊगा प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है। क्वेश्चन चल रहा था हाउस प्रॉपर्टी रेंट कितना गिवन है 1,20,000। बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडी, देखो हाउस प्रॉपर्टी वाला केड़े हेड से जाना हाउस प्रॉपर्टी, देन बैंक इंटरेस्ट किथे जाना अदर सोर्सेज। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हेड। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया किथे पढ़िया एग्रीकल्चरल इनकम च पढ़िया। हुन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी किथे सी, रूल केड़ा सी सब तो पहला कि दूजा कि तीजा चौथा, पहला पहला रूल 8 की परसेंटेज सी 64, ठीक है। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। then expenditure on earning that income ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ। after that determine the tax liability of X for the assessment year 25-26 under old tax regime on the assumption that he contributes rupees 8,500 towards the PPF। okay, सब तो पहली चीज देखो, रुक जाओ बच्चा रुक जाओ। सब तो पहली चीज की बनाया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम से फर्स्ट फर्स्ट चीज की आनी सी कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। जीएवी ਦੇ ਅੰਦਰ स्टेप्स बोलोगे, जीएवी ਦੇ अंदर स्टेप्स बोलोगे। पहला एमआरवी और एफआरवी विच एवर इज हायर, रिकॉल करो सर, है ना। म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, नहीं गिवन। स्टेप 2 ईआरवी दैट इज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू इज इक्वल टू लोअर ऑफ
स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, लोअर हो गया। ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦਾ ਨੀਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਲੀਵ ਸਟੈਪ 2। ਸਟੈਪ 3 बोलो। स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट विच एवर इज हायर। ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 1,20,000, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1,20,000। स्टेप 4 GAV is equal to step 3 minus vacancy allowance। कोई वैकेंसी नहीं गिवन, वैकेंसी में जब वेकेंट रहा ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ, नो मींस GAV कितनी आ गई 1,20,000। ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਟ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ GAV ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 1,20,000 ਮਾਈਨਸ म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ब्रैकेट्स लिखी था सी, कुछ नहीं किया, म्यूनिसिपल टैक्स है ही नहीं, नील की बचा नैब दैट इज नेट एनुअल वैल्यू 1,20,000। उच्चों की करते माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 ਉਹਦਾ A पार्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी 13% ऑफ नैब, B पार्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, लोन का लिया होना चाहिए उसी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ओके सो डिडक्शन सिर्फ A दी मिल गई एंड योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ गई 84,000 रुपीज एवरीवन, यस और नो, कोई डाउट, पूरा याद आ गया हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक फॉर्मेट, यस और नो। उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ टी ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਕਮ ਗਿਵਨ, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया 1,70,000 ग्रॉस इनकम इज गिवन। और ਉੱਚੋ ਕਹਿੰਦੇ एक्सपेंडिचर ऑन अर्निंग टी इनकम 16,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1,54,000। और रूल केड़ा पढ़िया ਇਹਦਾ रूल 8, एग्रीकल्चरल पोर्शन कितना मनोगे 60% एंड बिजनेस इनकम कितना मनोगे 40%। क्लियर विद दिस, यस और नो। टोटल इनकम सब तो पहला की पाते सैलरी इनकम है कोई, नो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी फाइंड की थी 84,000। पीजीबीपी मतलब बिजनेस इनकम कितनी फाइंड की थी देखो 61,600। फोर्थ इज कैपिटल गेन्स, चेक द सी पार्ट, short term capital gain on sale of plot on 10th July 24, बोलो 70,000। then income from other source किया होगा your bank interest on fixed deposits 50,000। सारे आ गए, gross total income कितनी आ गई 2,65,600। then minus वेट रचर वेट जीटीआई आ गया 5 हेड्स ऐड करके माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 ਦੇ ਅੰਦਰ 80C ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸੇਵਿੰਗਸ ਐਂਡ LIC ਰਿਲੇਟਡ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪੀਪੀਐਫ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ 8500। ਸੋ ਉੱਥੇ 80C ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਐਂਡ योर ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2,57,001। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਏ ਯਸ ਔਰ नो। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ एग्रीकल्चर ਜਾਂ नॉन एग्रीकल्चर, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ एग्रीकल्चर पाई कितने नो, सारे बाकी सोर्सेज है, मतलब दिस इज योर टोटल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2,57,100 एंड योर एग्रीकल्चर इनकम इज कितनी है 92,400, यस और नो। इस तो बाद दसोगे देखो तो एक्सटेंड होया क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इनकम कितनी आई 92,400 व्हिच इज ग्रेटर देन 5,000, यस। नॉन एग्रीकल्चरल is greater than the basic exemption limit 2,50,000, yes, so integration can be done। इस क्वेश्चन में टैक्स भी पूछे है ना, so add them both then calculate tax, you know the steps, then add agricultural income with basic exemption limit, calculate tax, दोनों तक ही आ गया अगले स्टेप डिफरेंस। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 355 तक टैक्स आ गया, then rebate चेक करो इंडिविजुअल है, yes x was the name इंडिविजुअल, कुछ नहीं किया रेजिडेंट ही है। then next point is टोटल इनकम इज नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। ਹੁਣ देखो इस क्वेश्चन से समझ आ रहा है टोटल इनकम नो इथों नॉन एग्रीकल्चर तो क्यों पिक करेगा कितनी है 2,57,100 which is less than 5 lakh, it can be less than or equal to 5 lakh, so है means he will get rebate under section 87A actual tax or 12,500 whichever is less, so 355 रुपीज से तो टैक्स पेबल की आ गया net, everyone yes or no, yes or no, any doubt बच्चा, sure clear।